Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We're here to get you smart, fast. And you're probably listening because, well, you want to cut through the noise, get right to the important stuff. Exactly. And today, we're doing just that with a book that's actually recommended reading for the virtual summer school in entrepreneurship research 2025. Oh, right. That's a great initiative. It really is. And we should give a quick shout out, a thank you to the organizers. That's Professor Vishal K. Gupta and PhD candidate Athena Skiadopoulou. Both from the University of Alabama, yeah. Definitely props to them for putting that together. It's important work. Absolutely. And one more thing before we jump in, if you happen to prefer Hindi or Bengali, we've actually done versions of this deep dive in those languages too. Oh, nice. Yeah, check the description notes. The timestamps are right there. Good to know. So, the book itself, The Aspiring Entrepreneurship Scholar by D.A. Shepard. Right. What's the core idea? Well, think of it as sort of an insider's guide. It tries to demystify the whole academic game in entrepreneurship research. Everything from publishing. Yeah, publishing, teaching. It's got practical advice for anyone really looking to, make a mark in the field. Okay, so our goal here isn't just a simple summary. No. We want to pull out the key strategies, the mindsets that you can actually use. Whether you're aiming to be a scholar yourself or maybe just looking for some fresh angles on your own work. Exactly. We'll look at how the author built his career, how he dealt with publishing, which can be tricky. Understatement. Right. And even how he applied sort of entrepreneurial thinking in the classroom. Okay, let's get into it. What's the first big thing that jumps out? For me, it's the mindset. Right away, the author talks about being proactive. Not just waiting for things to happen. No. He actively went out and learned the publishing ropes, said it was more about hard work than just raw talent. Interesting. And he had a weird reaction to feedback. Yeah, that was fascinating. He was actually excited to get feedback, even rejections early on. Seriously? Yeah. Most people dread that email. I know. He saw it as a chance to learn, to improve. He even mentions Harry Sapienza, pointing out how unusual that is, how most people react negatively to an R&R. So what did he do differently? Well, he and his colleagues had this strategy, keeping multiple papers in play all the time. So spreading the risk. Partly, but it was more than that. It was like a deliberate way to learn faster, continuous feedback loops. Applied learning, basically. Don't put all your eggs in one basket. Pretty much. It's that portfolio approach, right? More chances to learn, and it softens the blow when things don't pan out with one project. Very entrepreneurial. And this ties into motivation too, doesn't it? It does. He talks a lot about intrinsic motivation, the passion for the work itself. Right. There's a paradox there, isn't there? Focusing too much on the rewards Can actually stop you from getting them. Yeah. If you're just chasing promotions, it might kill the creativity you need for breakthrough work. So love the process, love the puzzle, the rest follows. That seems to be the message. And finding those interesting puzzles, those research questions, he suggests thinking like an entrepreneur there too. How so? Using your own unique knowledge, what he calls idiosyncratic knowledge. Don't just follow the herd. Cap into what you know uniquely. Exactly. And he mentions his friend Evan Douglas. Apparently, he'd resist diving deep into the literature right away. Really? To keep his perspective fresh. Seems like it. Trusting his own angle first, not getting bogged down too early. Avoid that premature closure on the lit review. That's quite freeing, actually. The pressure to know everything first can be paralyzing. It can, and this connects to another idea. Reading widely. Like entrepreneurs scanning the environment. Yeah, exactly. Look outside your narrow field, he gives an example. Using coherence theory of vision from psychology. Okay. To understand how entrepreneurs form opportunity beliefs. Seeing how ideas from totally different areas can spark something new. Making those unexpected connections. That's where the real originality comes from, I guess. Seems likely. Now, confidence. Research self-efficacy, he calls it. How do you build that? Good question. Especially early on. He talks about small wins, like nailing a conference presentation, little victories that build belief. Makes sense. Step by step. And collaborating with senior scholars, not just for the publication, but for the learning, absorbing how they think, how they work, mentorship. That's huge. Yeah. And he also has this personal rule about who he works with. Oh yeah, that was quite candid. He basically says he only works with people he likes and trusts. Even if it means passing up a top journal. Apparently so. He values the process, enjoying the work, and protecting his reputation. Collaboration has to feel right.
That's a powerful point. The human element matters, even in high-stakes academia. Definitely. So wrapping up that mindset piece, it's about self-reflection, knowing your passion, intrinsic motivation, managing emotion. Ups and downs. Right. And using that portfolio approach to handle the uncertainty. It's a very entrepreneurial way to frame the whole academic journey. Okay, let's shift to the nitty-gritty, the publication process, that black box. Yeah, it can feel like that, but the book lays it out quite clearly. Starts with submission, obviously. And then the dreaded desk reject. Right. But he clarifies something important from his editor days. It's not always about quality. Sometimes it's just a poor fit. The paper's fine, but it doesn't match the journal's scope or audience. Like the family business example he gave, submitted to JBV. Exactly. Good paper, but didn't connect strongly enough to entrepreneurship theory for that specific journal. So a desk reject there saves everyone time in a way. Okay, useful distinction. So if you get past the desk, Then it goes out for peer review. Reviewers look at, the usual suspects: novelty, significance, theory, methods, rigor. the standard checks. But crucially, the editor makes the final call. It's not just vote counting based on reviewer recommendations. The editor uses their judgment. Right, and then comes the response. Responding to reviewers. That's often the hardest part. It can be stressful, but the book pushes for a collaborative view. Not fighting them. No. See them as helping you make the paper better. Acknowledge the good points first. Show you appreciate the feedback. Right. Then tackle the criticisms. Try to do what they suggest, if it makes sense. If you disagree, You have to justify it. clearly and respectfully. Explain why you're taking a different path. He gives examples like when reviewers question their measures or theory. And they sometimes collected more data. Yeah, like objective industry data or even qualitative interviews to strengthen their case, doing the extra work. What about when reviewers totally disagree with each other? That happens all the time. Oh, yeah. The advice there is key. Look to the editor. Did they give any guidance in their decision letter? And if not? Reach out. Explain the conflicting advice, propose your solution, and justify it. You need to make a choice, but show you've considered all the feedback. Okay, that makes sense. It's about reasoned decisions. Exactly. And one final tip he gives, after you've made all the revisions, reread the whole thing as if you were the reviewer. Try to see it from their perspective. Did you really address the core concerns? Good self-check. And don't forget to thank the reviewers and editor in the final paper. Absolutely. Small thing, but important courtesy. Okay, let's pivot to teaching, another big part of academic life. Right. And the author notes his own shift moving from Australia, where teaching loads might be heavier, to the US with more research focus. That shapes his view. And he busts some myths about teaching in research schools. He does. Myth 1, teaching doesn't matter that much. Which isn't true. Not at all. He argues good teaching impacts rankings, student satisfaction, even how employers see graduates. It definitely matters. Okay, what else? Myth 2, you can't do research on teaching days. He says, nope, integrate it. Keep the momentum going. Don't silo them completely. Makes sense. Avoids that stop-start feeling. Then there's the looking too young myth, especially for MBAs. His advice: create a collaborative vibe, focus on curiosity. It overcomes perceptions. Good point. And student evaluations. Myth 4. That they don't matter. He says, they do. Maybe flawed, but they get looked at for hiring, promotion, tenure. You can't ignore them. And the last one. Students don't want to learn. He challenges that. Says maybe that's instructor bias. Own the classroom energy. Make it engaging. Don't just blame the student. Okay, so busting myths leads to practical hints. Yeah, some really good down-to-earth advice. First, teaching is learning for you too. Stay curious, ask good questions. Especially in entrepreneurship, it's always changing. Love that. What's next? Hint 2 is the Woody Allen quote. 70% of success is showing up. Just be present, be available. But professionally available, right? Hint 3. Exactly. Set boundaries, office hours, manage email efficiently. Be accessible, but protect your time. Hint 4. Be fair, not lenient. Crucial. Have a clear syllabus, stick to your grading policies. Consistency is key for fairness. He also says teach what you're passionate about. Yes. Let that enthusiasm show. Be yourself, or maybe your teaching alter ego. Okay. And dealing with tricky students. Proactively. Refer back to the syllabus. Meet face-to-face. Address issues early. And grading. Treat it like ripping off a Band-Aid. Timely, detailed feedback.
He also touches on grading tricky things like participation and teamwork, which is always tough. Yeah, no easy answers there. But overall, it's applying that proactive value creation mindset to the classroom. Treat students like, well, not customers exactly, but Stakeholders you want to provide value for. exactly. Okay, let's talk jobs. Getting that first faculty position. The holy grail for PhD students. What do hiring committees look for? 4 main things, he says. Research, potential publications, pipeline, teaching ability evaluations, maybe a teaching demo. Okay. Cultural fit, will you mesh with the department? And for doctoral students, a solid dissertation proposal well underway. And the timeline in the U.S., it's pretty specific. It is. Ads out around June, July, deadlines often early fall, like October 1st. But apply earlier. Yeah, he advises getting apps in by early July if possible. Committees often start looking before the big Academy of Management Conference, AOM, in August. Where the first interviews often happen. Right, AOM interviews, or maybe virtual ones now too. Then campus visits in the fall. Offers often go out October, November. It moves fast. So what do you need in that application packet? The essentials. Cover letter tailored, explaining your fit, CV comprehensive. PhDs should include their dis abstract and completion date. Work samples. Yep, your best papers, teaching evaluations if you have them, and your list of references, including your advisor. AOM sounds critical. Any specific advice for that? Book a room in the placement hotel for networking, go to the division social events, be enthusiastic in interviews. Having good questions ready. Definitely. Show you've done your homework, and be flexible with scheduling. Okay, you get the campus visit invite. Now what? Prep. Research everyone you'll meet, know their work, and nail the job talk. The job talk. High pressure. Totally. Showcase your best research. Clear, concise, leave plenty of time for questions. How do you handle questions? Collaboratively. See it as a discussion, not a defense. Be open to feedback. Engage with their ideas. Maybe have some backup slides ready for deeper dives. Good tip. And after the visit? Etiquette matters. Send thank you emails, personalized ones, referencing the conversation. Keep them updated. Yeah, if your CV changes, new publication accepted, award 1, let the schools know. And keep an open mind until you have an offer. Right. The offer itself. How to navigate that. First, be enthusiastic. Ask clarifying questions. But don't negotiate before you have the formal written offer. What is negotiable, typically? Salary, summer support, teaching load, course preps, research budget, moving expenses, start date. But maybe not huge changes. Right. The scope can be limited. Get advice from mentors before negotiating. And get everything agreed upon in writing. Solid advice. Okay, moving beyond the first job. Promotion. Building that record. It can seem murky. Yeah, the book calls it opaque sometimes. How do senior colleagues actually assess your record? How do they? Several ways. They read your work, obviously. They look at citation impact. But with caveats. Big caveats. Citations don't always equal quality. Self-citations, negative citations, and journal impact factors are just proxies. They don't tell the whole story about your paper. He mentioned that debate about SMJ versus JBV rankings, didn't he? Yeah, that email exchange really showed the different perspectives, even within one school, about journal prestige and what counts for promotion. It's not always clear-cut. And different schools have different benchmarks, like the 5 A's at Kelly. Exactly. Institutions categorize journals A-, whatever, and set expectations. He mentions JBV's A status in some lists, the hope for it becoming a straight A. It shows the ongoing debate. So it's not just where you publish, but also quantity and originality. Right. You need a solid body of work, but it has to be novel, making a real contribution, not just ticking boxes. External reviewers play a big role. Huge. The book talks about how they're chosen often from peer or aspirational schools. Their letters carry a lot of weight. Any potential bias there? There can be. Conflicts of interest, maybe reviewers from schools you want to be compared to. It's complex. The book gives some advice on reading those letters, too. So getting promoted takes sustained effort, quality work, and navigating these sometimes subjective evaluations. Pretty much. High quality, impactful research over time, understanding how it's judged. Okay, so wrapping up this deep dive, the Aspiring Entrepreneurship Scholar really packs a punch. It definitely does. And being on that reading list for the virtual summer school in 2025 shows its relevance. It gives scholars new or established real strategic tools. For research, teaching, the whole career path. Exactly. And just that final reminder again, Hindi and Bengali versions are available. Check the description for timestamps. We really hope this has been useful for you. Yeah, I hope it sparked some clarity, maybe some new ideas for your own journey. And maybe here's a final thought to leave you with. A bit provocative, perhaps? Go for it. Success in academia, much like entrepreneurship itself,
seems to demand this blend. Strategic planning, sure, but also adaptability, resilience when you get feedback. And that genuine deep passion for what you're studying. Absolutely. And, those principles, passion, strategy, resilience, they aren't just for academics and entrepreneurship. No, they're valuable for anyone, really. Anyone pursuing knowledge, trying to make an impact, whatever their field. Well said. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, D.A. शेफर्ड की द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कॉलर। और हाँ, ये किताब वर्चुअल समर स्कूल इन एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च 2025 के पसंदीदा संदर्भों में भी शामिल है। आपको शायद पता हो, ये समर स्कूल 2021 में शुरू हुआ था, तो ये इसका 5वां साल होगा। जी, और ये पूरी तरह निःशुल्क है। उद्यमिता अनुसंधान में एक बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण पहल है ये। इसमें कुल 5 सेशन होते हैं। हाँ, हर सेशन में 4 पेपर होते हैं और कभी-कभी बुक रिव्यूज भी। बिल्कुल। और इस शानदार पहल के लिए हमें जरूर धन्यवाद देना चाहिए प्रोफेसर विशाल की गुप्ता और पीएचडी उम्मीदवार अथीना स्कियादोपुलो को, दोनों अलाबामा विश्वविद्यालय से। जी हाँ, उनका नेतृत्व वाकई काबिले तारीफ है। तो वापस किताब पर आते हैं। ये उभरते हुए, मतलब जो नए उद्यमिता विद्वान हैं, उनके सफर के बारे में है। लेखक खुद बताते हैं कि उनके पास कोई ज्यादा औपचारिक ट्रेनिंग नहीं थी, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, सीखना पड़ा कि ये प्रकाशन वगैरह कैसे होता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? शुरू में जब उनके पेपर रिजेक्ट होते थे तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो उत्साहित होते थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। आमतौर पर रिजेक्शन से निराशा होती है। बिल्कुल। पर उनका नजरिया था कि अरे वाह, फीडबैक मिला, अब मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सीखने का एक बहुत ही सकारात्मक तरीका है। और यही रवैया, मतलब साथियों के साथ काम करना, फीडबैक को सच में इस्तेमाल करना, जिसे वो डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, इसी से उन्हें शुरुआती सफलता मिली। सही कहा। और इसी से उन्हें वो आत्मविश्वास मिला कि हाँ, मैं इस फील्ड में करियर बना सकता हूँ। जी। चलिए, ये तो हुई मानसिकता की बात, पर रिसर्च के लिए आइडिया कहाँ से लाएं? लेखक एक उद्यमी मानसिकता अपनाने को कहते हैं। वो इडियोसिंक्रेटिक नॉलेज यानी व्यक्तिगत ज्ञान पर जोर देते हैं, जैसे उनके दोस्त इवान डगलस थे। हाँ, उन्होंने जिक्र किया है। वो पहले लिटरेचर रिव्यू नहीं करते थे, वो अपने आइडिया से शुरू करते थे। ये थोड़ा उल्टा नहीं है? है तो पारंपरिक तरीके से अलग, बिल्कुल। लेखक का सुझाव यही है कि अपना ज्ञान बढ़ाइए, सिर्फ अपनी फील्ड का नहीं। जैसे वो कहते हैं कि साइकोलॉजी के रिव्यूज पढ़िए, मतलब अलग अलग दिखने वाली चीजों में गहरे कनेक्शंस ढूंढना, वही रचनात्मकता लाता है। कनेक्शन ढूंढना। अच्छा, लेकिन आइडिया मिल भी गया तो उसमें टिके रहने की प्रेरणा, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? लेखक ने आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा के बारे में कुछ कहा है, मतलब काम का मजा और प्रमोशन वगैरह। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। लेखक बताते हैं कि अगर आप सिर्फ बाहरी पुरस्कारों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे टेन्योर पाने के लिए, हाँ, तो शायद वो पुरस्कार पाना और मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो बाहरी दबाव आपकी अंदरूनी जिज्ञासा, आपकी रचनात्मकता को कम कर सकता है। जबकि अगर आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें सच में मजा आ रहा है, रुचि है, मतलब आंतरिक प्रेरणा है, तो ज्यादा संभावना है कि आप कुछ नया, कुछ प्रभावशाली रचेंगे। और फिर बाहरी पुरस्कार अपने आप मिल जाते हैं शायद। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। आंतरिक प्रेरणा ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली होती है। ये तो हुई रिसर्च की बात, पर विद्वानों के जीवन का एक और अहम हिस्सा है शिक्षण। क्या उसके बारे में भी कुछ है किताब में? जी हाँ, एक पूरा अध्याय शिक्षण पर है। उसमें कई आम धारणाओं, मिथकों को तोड़ा गया है। मूल बात यह है कि अच्छा शोधकर्ता होने के लिए अच्छा शिक्षक होना जरूरी नहीं, या अच्छा शिक्षक अच्छा शोधकर्ता नहीं हो सकता। ये सब गलत धारणाएं हैं। अकादमिक उत्कृष्टता के लिए दोनों में ही समर्पण चाहिए। समझ गया। तो आंतरिक प्रेरणा जरूरी है, लेकिन अपने काम को प्रकाशित करवाना भी एक चुनौती है। आपने रिजेक्शन की बात की थी, एक होता है डेस्क रिजेक्ट। ये क्या होता है? हाँ, डेस्क रिजेक्ट मतलब संपादक ने आपका पेपर समीक्षकों को भेजे बिना ही नामंजूर कर दिया। ओहो। अक्सर ऐसा तब होता है जब पेपर जर्नल के दायरे में फिट नहीं बैठता, या फिर उसमें गुणवत्ता की साफ कमी दिखती है, जैसे नयापन नहीं है, थ्योरी कमजोर है, या मेथोडोलॉजी ठीक नहीं। ये प्रक्रिया थोड़ी निराश करती है, पर इसका मकसद समीक्षकों का समय बचाना और लेखक को जल्दी जवाब देना होता है।
ठीक है, और अगर डेस्क रिजेक्ट से बच गए तो फिर आता है RNR यानी रिवाइज एंड रीसबमिट। जी। यहाँ लेखक कहते हैं कि समीक्षकों की टिप्पणियों को लेकर एक सहयोगी रवैया अपनाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समीक्षकों को विरोधी ना समझें। वो आपके पेपर को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, भले उनकी बातें कभी कभी तीखी लगें। उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लें, कोशिश करें कि उनकी सलाह मानें, और अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो विनम्रता से तर्क के साथ अपनी बात रखें। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ पेपर सुधारने की नहीं है, ये एक विद्वान के तौर पर आपके विकास का भी हिस्सा है। ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, एक सफल उद्यमिता विद्वान बनने के लिए लगातार सीखना जरूरी है। हाँ, और फीडबैक को स्वीकार करना, यहाँ तक कि रिजेक्शन को भी। सही। अपने काम के प्रति जुनून होना, मतलब आंतरिक प्रेरणा। और प्रकाशन की प्रक्रिया में सहयोग की भावना रखना। और ये भी याद रखना कि शिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, शोध और शिक्षण दोनों में उत्कृष्टता जरूरी है। अंत में लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब उनके अपने अनुभव हैं, उनके सीखे हुए नियम हैं। हाँ, ये जरूरी है, हर किसी का सफर अलग होता है। तो हर विद्वान को अपने लिए, अपने हालात के हिसाब से अपने नियम खुद बनाने होंगे, या दूसरों के नियमों को अपने हिसाब से ढालना होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कोई अपनी अनूठी विद्वत्तापूर्ण यात्रा कैसे तय करता है, कैसे विकसित करता है। রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে সবাইকে স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজ আমরা একাডেমিক লেখালেখি মানে প্রকাশনার জগৎটা একটু অন্যভাবে দেখব। হ্যাঁ, D.A. শেফার্ডের একটা বই আছে, দি অ্যাসপায়ারিং এন্টারপ্রেনারশিপ স্কলার, ওইটার উপর ভিত্তি করে। একদম। আর এই বইটা কিন্তু মানে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাবামার প্রফেসর বিশাল কে গুপ্তা আর PhD ক্যান্ডিডেট আথিনা স্কিয়াদোপৌলু এর উদ্যোগে একটা ভার্চুয়াল সামার স্কুল হচ্ছে। ও হ্যাঁ, ভার্চুয়াল সামার স্কুল ইন এন্টারপ্রেনারশিপ রিসার্চ 2025, তাই না? ঠিক। তো সেটার জন্য এই বইটা বাছাই করা হয়েছে। এই দারুণ উদ্যোগটার জন্য তাদের অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যই, অসাধারণ একটা উদ্যোগ। তো বইটাতে একজন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ স্কলারের পুরো জার্নিটাই আছে। তবে আজ আমরা একটু বেশি ফোকাস করব জার্নালে পেপার পাবলিশ করার যে প্রক্রিয়াটা, বেশ কঠিন কিন্তু খুব দরকারি। হ্যাঁ, ওই দিকটাতেই বইটাতে এই নিয়ে বেশ ভালো আলোচনা আছে। লেখক তো শুরুতেই নিজের গল্প বলেছেন, তাই না? হ্যাঁ, বলেছেন যে শুধু ট্যালেন্ট দিয়ে হয় না, পুরো প্রসেসটা শিখতে হয়েছে, মানে লেগে থাকতে হয়েছে। সহকর্মীদের সাথে কাজ করা, ভুল থেকে শেখা, এসব। ঠিক। আর মজার ব্যাপার হলো, শুরুতে নাকি উনি রিজেকশন লেটার পেলেও বেশ উত্তেজিত হতেন। তাই নাকি? কেন? ভাবতেন যে বাহ, 3 জন এক্সপার্ট লোক আমার কাজটা মন দিয়ে পড়ে ফিডব্যাক দিচ্ছেন, এর চেয়ে ভালো আর কি চাই। ইন্টারেস্টিং অ্যাটিটিউড তো। এই শেখার মানসিকতাটাই হয়তো জরুরি। একদম। লেখক তো এই পুরো পাবলিকেশন প্রসেস, বিশেষ করে RNR মানে রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিট পর্বটাকে একটা কোলাবোরেশন হিসেবে দেখতে বলছেন, প্রতিযোগিতা নয়। ঠিক। মানে রিভিউয়ারদের কমেন্টকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ভাবা চলবে না। না, বরং এটাকে পেপারটা আরো ভালো করার সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। এটা কিন্তু শুধু কথার কথা না, সত্যি কাজে দেয়। আচ্ছা, বইটাতে তো বিভিন্ন ধাপের কথাও বলা আছে, যেমন ধরুন ডেস্ক রিজেক্ট। হ্যাঁ, ডেস্ক রিজেক্ট মানে এডিটর রিভিউয়ারদের কাছে পাঠানোর আগেই পেপারটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এটা শুনলে তো একটু ধাক্কা লাগার কথা। লাগতেই পারে, কিন্তু লেখক বলছেন এটারও কারণ আছে, দুটো প্রধান কারণ। কি কি? এক, পেপারটা জার্নালের ফোকাসের সাথে মিলছে না, মানে পুয়ার ফিট। আচ্ছা। আর 2, পেপারটার কোয়ালিটি হয়তো খুবই খারাপ, মানে পুয়ার কোয়ালিটি। সেক্ষেত্রে আসলে শুরুতেই রিজেক্ট করে দেওয়ায় লেখকেরও সময় বাঁচে, রিভিউয়ারদেরও। ঠিক। লেখক অন্য কোথাও তাড়াতাড়ি ট্রাই করতে পারেন, এটাও একটা দিক। একদম। এরপর তো রিভিউ প্রসেস, তারপর এডিটরের সিদ্ধান্ত, রিজেক্ট হতে পারে, RNR আসতে পারে, বা অ্যাকসেপ্টও হতে পারে। ওই RNR পাওয়ার পর রিভিউয়ারদের কমেন্টের উত্তর দেওয়া, ওটা তো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ মনে হয়। চ্যালেঞ্জ তো বটেই, তবে লেখক এখানেও কিছু ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন রিভিউয়াররা যেখানে প্রশংসা করেছেন সেটা আগে অ্যাকনলেজ করা। আচ্ছা, পজিটিভ দিকটা আগে বলা। হ্যাঁ, আর যেখানে সমালোচনা সেখানে যতটা সম্ভব তাদের সাজেশন ফলো করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যদি কোনো সাজেশন মানা সম্ভব না হয় বা লেখক যদি একমত না হন, তখন খুব স্পষ্টভাবে যুক্তিসহ কারণটা বলতে হবে। ইগো বা জেদ থেকে নয়, বরং লজিক দিয়ে।
লেখক নিজের উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন সেলফ রিপোর্ট ডেটা নিয়ে রিভিউয়ারদের চিন্তা ছিল। উনি তখন অতিরিক্ত অ্যানালিসিস করে আরও ডেটা যোগ করে সেটা অ্যাড্রেস করেছিলেন। মানে একটা ডায়ালগ তৈরি করা। বোঝা গেল, মানে ব্যাপারটা সহযোগিতামূলক রাখা। আচ্ছা, কিন্তু এত খেটে রিভাইজ করার পরেও তো পেপার রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে। পারে, অবশ্যই পারে। সেটা ওই প্রক্রিয়ার একটা অংশ। তখন তো খুব হতাশ লাগবে। লাগাটা স্বাভাবিক, কিন্তু লেখক বলছেন তখনও ভেঙে না পড়ে রিভিউয়ারদের কমেন্টগুলো থেকে শিখতে হবে, দেখতে হবে কেন হলো। পরের পেপারের জন্য শিক্ষা নেওয়া আর কি। ঠিক, প্রত্যেকটা রিজেকশনই কিছু না কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায় ভবিষ্যতের জন্য। আচ্ছা, আর একদম শেষে যখন সব ঠিকঠাক, পেপার অ্যাকসেপ্টেড, তখন আসে প্রুফ চেকিং। হ্যাঁ, ফাইনাল ধাপ। কিন্তু এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন? সামান্য ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু এত পরিশ্রমের পর ফাইনাল পাবলিকেশনে যদি ধরুন টেবিল বা ফিগারে ভুল থাকে, সেটা দেখতে খুব খারাপ লাগে, তাই না? এটা আসলে নিজের কাজের প্রতি, পুরো প্রসেসটার প্রতি একটা সম্মান দেখানো। ঠিক বলেছেন। তাহলে পুরো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে একাডেমিক পাবলিকেশনের এই লম্বা জার্নিতে ধৈর্য ধরতে হবে, শিখতে হবে। আর রিভিউয়ার এডিটরদের সাথে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক রাখতে হবে, জেদাজেদি না করে গঠনমূলকভাবে এগোনো। গ্রহণশীলতা আর উন্নতির চেষ্টা। একদম। এই বইয়ের আলোচনাটা আমার মনে হয় যারা নতুন গবেষণা করছেন বা করবেন তাদের জন্য খুব কাজের। শুধু প্রসেসটা জানা নয়, মানসিক প্রস্তুতিটাও জরুরি। ঠিক। আচ্ছা, শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে গেলে কেমন হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই যে পুরো প্রক্রিয়া, বারবার রিজেকশন, কঠিন সমালোচনা, এর মধ্যেও নিজের রিসার্চের প্রতি যে প্যাশন, ভেতরে যে মোটিভেশন, সেটা ধরে রাখার রহস্যটা কি হতে পারে? শুধুই কি টেকনিক্যাল কৌশলগুলো, নাকি এর বাইরেও কিছু আছে? গভীর প্রশ্ন।